My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another session on general awareness. And if you've not already subscribed to the channel and you're liking the content, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. So first question, which Indian ecologist won the Champions of the Earth Award 2024? Vanna Shiva, Madhav Gadkil, Jadon Payang and Rajendra Singh. So answer to this question is Madhav Gadkil. Madhav Gadkil won the Champions of the Earth Award in 2024. And this award, Champions of the Earth Award, is given by UN Environment Program, UNEP. This award, Champions of the Earth Award, is given by UN Environment Program, UNEP. Okay. And given to Madhav Gadkil this year because of his work in Western Ghats, the global biodiversity hotspot. His work in the Western Ghats. What about other three options? So Vanna Shiva, she is also an environmental activist. Jadon Payang, you might have heard the name. Jadon Payang is known as Forest Man of India. He single-handedly planted a forest in Majuli Island near Brahmaputra. Single-handedly planted a forest in Majuli Island. Okay? Majuli Island, that was close to Brahmaputra, Assam. And that forest is known as Molai Forest. Similarly, Rajendra Singh is known as Water Man of India because of his work in Rajasthan in terms of water conservation. So he's known as Water Man of India because of water conservation efforts. Next question. Match the following: devaluation, depreciation, deflation, exchange control. So what should be the correct match? Devaluation of a currency is connected with official reduction in external value of the currency. Official reduction in external value of the currency. Depreciation is connected with decline in the market rate of exchange. For example, in the past few days, rupee has depreciated a lot in comparison to dollar. So decline is the market rate of exchange. Deflation is just the opposite of inflation. So deflation is contraction of home currency. And exchange control is foreign exchange ration. So A5, B1, C2, D3. Option A is the answer. Okay. Next question. Who among the following was the youngest instrumentalist to be awarded the Padma Shri and Padma Bhushan by the Government of India? Pandit Ravi Shankar, Ustad Zakir Hussain, Pandit Bhimsen Joshi or Ustad Bismillah Khan? Youngest instrumentalist to be awarded Padma Shri and Padma Bhushan. The answer is Ustad Zakir Hussain. Zakir Hussain, the tabla player, Wahtaj. Tabla player was awarded Padma Shri and Padma Bhushan, and he was the youngest instrumentalist to be awarded those awards. Pandit Ravi Shankar was awarded Bharat Ratna in 1999. In sitarist, Pandit Ravi Shankar, sitarist and composer. Pandit Bhimsen Joshi is an Indian vocalist. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से कनेक्टेड है.
and his singing style is khayal singing. Khayal. Ustad Bismillah Khan is a Shahnai player, Shahnai Vadak. Next question. What type of radiation has very short wavelengths produced by nuclear explosions, lightning, and less dramatic activity of radioactive decay? Very short wavelengths. So देखो wavelengths का scenario क्या है कि some wavelengths are visible to us and those wavelengths are known as visible light spectrum. Visible light spectrum, and that ranges from roughly 400 nanometer to 700 nanometer. Okay. Vibgyor. Violet having the smallest wavelength and red having the largest wavelength. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 700 नैनोमीटर्स. अब 700 नैनोमीटर से आगे जाएंगे, सो द स्पेक्ट्रम इज इंफ्रारेड वेवलेंथ, इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन. ओके, क्या है, क्लियर है? ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा होगा 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक. That range is infrared radiation. This has longer wavelength in comparison to visible light spectrum से longer wavelength है, और longer the wavelength, जितनी ज़्यादा wavelength होगी उतना ही एनर्जी कम होगा, उतना ही पेनिट्रेशन कम होगा. ठीक है, longer the wavelength, smaller is the energy. Smaller wavelength होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा. ठीक है, सो longer wavelength है इंफ्रारेड का, एनर्जी कम होगा. ठीक है, और इंफ्रारेड का यूजेस क्या है? रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, और दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विथ थर्मल रेडिएशन. सम एनिमल्स कैन सी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट्स गर्म होंगे, हॉट होंगे, जितना ज़्यादा हॉट होंगे उतना ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करेंगे. एंड इंफ्रारेड रेडिएशन से ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ का रेडिएशन हो जाएगा हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन. माइक्रोवेव, द वेवलेंथ इज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर. माइक्रोवेव ओवन में दिखेगा तुमको माइक्रोवेव रेडिएशन, दिखेगा नहीं पर माइक्रोवेव रेडिएशन होगा. ठीक, रेडार में होगा. और ये जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन दिखता है ना, आई मीन दिखता तो नहीं है, बट द स्टैटिक साउंड, दैट इज ऑल्सो माइक्रोवेव रेडिएशन. तो कम्युनिकेशन में यूज होगा माइक्रोवेव. माइक्रोवेव रेडिएशन इज बेसिकली यूज्ड इन कम्युनिकेशन. ये तो बात होगी लॉन्गर वेवलेंथ की. शॉर्टर वेवलेंथ पे चलते हैं, तो 400 नैनोमीटर से स्मॉलर वेवलेंथ क्या होगा? दैट इज नोन एज अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सोर्स क्या है? सबसे मेजर सोर्स है इसका सन. सनलाइट हैज यूवी रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल फॉर अवर स्किन. शॉर्टर वेवलेंथ है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो पेनिट्रेशन भी ज्यादा होगा, और दैट इज वाई स्किन के लिए हार्मफुल है. ठीक है, स्किन के लिए हार्मफुल है. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी शॉर्टर रेडिएशन में आ जाएगा गामा रेडिएशन. ठीक है, अल्ट्रावायलेट मान के चलो 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, और गामा रेडिएशन हमारा हो जाएगा उससे भी छोटा. और गामा रेडिएशन क्योंकि इससे भी छोटा रेंज में लाई कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो शॉर्टर वेवलेंथ है, हाई एनर्जी है. हाई एनर्जी है, और इंपैक्ट क्या होगा इसका? हाई पेनिट्रेशन है.
So even it can damage our tissues को डैमेज कर सकता है, इसीलिए हार्मफुल रेडिएशन होता है, जो भी हमारा रेडिएशन होता है गामा रेडिएशन. And answer to this question is gamma radiation. The very short wavelength, less than 10 to the power minus 3 nanometer, that radiation is gamma radiation, produced by nuclear explosions, lightning, and radioactive decay. That radiation is gamma radiation. Okay. And this radiation is emitted by the nucleus of the atom. जब एक्सप्लोजन होता है कोई, तो न्यूक्लियस ऑफ द एटम से रेडिएटेड वेव्स होती हैं गामा वेव्स. रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द एटम. दैट इज वाई न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेडिएशंस एमिट होता है. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, लाइटनिंग इज नॉट अ न्यूक्लियर रिएक्शन, बट रेडियो एक्टिव डिके होगा, सो इनमें गामा रेडिएशन एमिट होगा. ओके, नेक्स्ट सीईओ विद देयर बायोग्राफीज को हमें मैच करना है. इंदिरा न्यूई, ग्रेगरी जकमैन, पीटर थील, शेरिल सैंडलबर्ग. एंड बायोग्राफीज है हमारी 0 to 1, द मैन हु सॉल्व द मार्केट, माई लाइफ इन फुल एंड लीन इन. तो व्हाट शुड बी द कनेक्शन? पीटर थील का बुक, वेरी फेमस बुक इज 0 to 1. देन ग्रेगरी जकमैन, इंदिरा नुई एंड शेरिल सैंडबर्ग. देखो लास्ट बुक हमारा लीन इन विमेन वर्क एंड विल टू लीड, दैट इज अ बुक रिटन बाय अ वुमन. और माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, दैट इज ऑल्सो बुक रिटन बाय अ वुमन. इंदिरा नुई का बुक है हमारा माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर. शेरिल सैंडबर्ग हैज रिटन लीन इन विमेन वर्क एंड विल टू लीड. एंड ग्रेगरी जकमैन का बुक है द मैन हु सॉल्व द मार्केट. सो A3, B2, C1 and D4. Option A is the answer. Okay, clear? Next question करते हैं. To which group the alkaline earth metals such as radium, barium and strontium belong? Group 5A, Group 2A, Group 1A and Group 3A. Alkaline earth metals, radium, barium, strontium. These belong to Group 2A. एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं periodic table of the elements. So if you focus on periodic table of the elements, so alkali metals lie in the first column. फर्स्ट कॉलम में टॉप पे तो है हाइड्रोजन, ठीक है, टॉप पे तो हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स पे फोकस करो. सो ऑल द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल दीज एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल्स. ठीक है, अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑल दीज मेटल्स आर अल्कली मेटल्स. देन सेकेंड कॉलम पे, सेकेंड कॉलम इज कॉलम दैट इज ग्रुप. ठीक है, कॉलम्स हमारे जो हैं ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं. तो पहला कॉलम क्या है, दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 1A. सेकेंड कॉलम, कॉलम का नेम भी ऊपर लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम इज ग्रुप 2 और ग्रुप 2A. और किसी भी सिंबल में एटॉमिक नंबर टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर, सिंबल इज इन द मिडल और बॉटम में मेंशन्ड है नेम ऑफ दैट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, और ये जो कलर्स हमें मेंशन्ड है, अल्कली मेटल फॉर द फर्स्ट कॉलम अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है. ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इन द सेकंड कॉलम विच इज सेकंड ग्रुप, ग्रुप 2 और ग्रुप 2A. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बैरियम एंड रेडियम. फिर हमारे बीच में ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 टिल ग्रुप 12, ये सारे के सारे हमारे ऑल दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स. ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं. और कौन कौन से हैं ट्रांजिशन मेटल्स हमारे? क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. फर्स्ट रो में देखो, टॉप रो में देखो, यहाँ पे ग्रुप 3 से ग्रुप 12 में, तो फेरियम बोल रहे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मैंगनीज एंड क्रोमियम, ऑल दीज आर अवर ट्रांजिशन मेटल्स. मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव ग्रुप 13 और ग्रुप 3A विच हैज बोरॉन एट द टॉप विच इज अ सेमी मेटल. और इसके बाद में सारे के सारे बेसिक मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
Similarly, group 4A में या group 14 में we have carbon at the top, carbon, then silicon, germanium, which are semi metals. उसके बाद में tin, lead, which are proper metals. Okay. Group 17 or group 7A is having halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, or last but not least, group 18 or group 8A, this is a group of noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. क्या ये समझ में आता है? ठीक है. So answer to the question was group 2A. Next question. The Bharatmala project of the government of India comes under which of the following ministries of India? Bharatmala project. देखो दो important projects हैं. One is Bharatmala. The other is Sagarmala. Bharatmala is for the road connectivity and Sagarmala is for the port connectivity. So Bharatmala project is by Ministry of Road Transport and Highways, or Sagarmala project is by Ministry of Port, Shipping and Waterways. So answer for this question is option D, Ministry of Road Transport and Highways. Okay, clear है? So some details about Bharatmala project. Bharatmala Pariyojana is a new umbrella program. Umbrella यानी कि there are many small projects under this particular project for the highway sector that focuses on optimizing efficiency of freight and passenger movement across the country. तो focus क्या है? Optimizing efficiency of freight and passenger movement by bridging critical infrastructure gaps through effective interventions like development of economic corridors, inter-corridor and feeder routes, national corridor efficiency improvement, border and international connectivity roads, coastal and port connectivity roads and greenfield expressways. Economic corridors का जो construction है, 9,000 kilometers of economic corridors have to be constructed under Bharatmala project. Feeder routes or inter corridors, roughly 6,000 kilometers of roads have to be constructed under these. National corridor efficiency improvement, roughly 5,000 kilometers of roads have to be constructed under these. And border road and international connectivity, 2,000 kilometers of roads. And port connectivity and coastal roads, 2,000 kilometers additional roads. And greenfield expressways have also to be built under these. And finally, the balance NHDP works, construction and maintenance of about 10,000 kilometers of new roads. NHDP is National Highway Development Program. Okay. So this is our Bharatmala project. Clear है? आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a Ramsar site in India? Now Ramsar is a location, is a place in Iran. This is the place in Iran. In that place, in Ramsar, a convention was held. ठीक है? A convention, an agreement was made, and that agreement is known as Ramsar Convention. यूनेस्को का कन्वेंशन है रामसार कन्वेंशन on wetlands. This came into existence in 1971 and accepted by countries in 1975. तो 1975 से ये रामसर कन्वेंशन हमारा स्टार्ट होता है. ठीक है? और दिस कन्वेंशन वाज अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनेस्को. वेटलैंड्स क्या है? देखो, वेट यानी कि वेट, गीले हैं, लैंड्स. तो लैंड्स दैट आर वेट, दोज आर कॉल्ड वेटलैंड्स, यानी कि द transition zone between land and water bodies, that is wetlands. Okay, wetland is a transition zone between lands and water bodies. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है हमारा और एंड हो रहा है और यहाँ पे लेक स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो द जोन बिटवीन जहाँ पे कि वाटर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे कि लैंड एंड हो रहा है, तो इस बीच का जो लैंड है, दिस इज काइंड ऑफ अ वेटलैंड. एंड वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट टू बी कंजर्व्ड बिकॉज ये क्या है, सेमी एक्वाटिक इकोसिस्टम है. वेटलैंड इज अ सेमी एक्वाटिक इकोसिस्टम. पानी भी है यहाँ पे, अर्थ भी है, दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम है. That is why it has to be conserved. That is the whole purpose of this treaty or agreement. Under this agreement, under Ramsar Convention, India के total 85 sites are there. 85 sites of India are under this Ramsar Convention. Those sites are known as Ramsar sites.
Out of these 85 sites, 18 sites, the maximum number of sites are in Tamil Nadu. अब कौन से ऑप्शन है हमारे जो कि इसमें से रामसर साइट नहीं होंगे? तो जो ऑप्शन हमारा वेटलैंड नहीं है वो तो पक्के से नहीं होगा. तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दैट इज नॉट अ वेटलैंड. ठीक है, दैट इज नॉट अ वेटलैंड. तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज द आंसर. दिस इज इन गुजरात. गुजरात में है. एंड दिस इज नोन एज, गिर फॉरेस्ट इज नोन एज फॉर एशियाटिक लायंस. लायंस के लिए बहुत फेमस है. केवला देव नेशनल पार्क इज इन भरतपुर, राजस्थान. एंड दिस इज अ वेटलैंड. वेटलैंड है, नोन फॉर aquatic birds, and this is a man-made wetland. केवलादेव नेशनल पार्क, that is a man-made wetland. Okay. Bird sanctuary भी है, because aquatic birds यहाँ पे आती रहती हैं, avian birds काफ़ी सारी आती हैं, so that is why this is a wetland. सुंदरबंस नेशनल पार्क तो बहुत ही फेमस है. सुंदरबंस is in West Bengal. Famous for mangrove forests. Mangrove forest, especially Sundari forest. Bengal tigers are also found there. It is in Delta. Chilka Lake is one of the first wetlands ratified. And this is also famous for migratory birds. And this is a brackish water lagoon. Okay. Some other Ramsar sites, दो चार और देख लेते हैं. Important Ramsar sites or wetlands basically. Wular Lake in Jammu and Kashmir. Vembanad Coal Wetland in Kerala. Okay. Next question करते हैं. Which of the following cups or trophies is not related to Indian domestic cricket? Dileep Trophy, Durand Cup, Devdar Trophy, and Ranji Trophy. Dileep Trophy, Devdar Trophy, and Ranji Trophy, all these are related to cricket. And Durand Cup, this is related to football. And hence answer should be Durand Cup. Option B will be the answer. ठीक है. Next question. Who amongst the following discovered evolution first? Herbert Spencer, Charles Darwin, E.O. Wilson, or none of these? The answer to the question is Charles Darwin. Charles Darwin is known as father of evolution. Father of evolution. He wrote a famous book. The name of the book was On the Origin of Species. ठीक है. Next question. Which of the following functions is not performed by vitamins in the body? They act as a source of energy. They act as a stimulant in the growth of the body. They act as agent in regulating the chemical processes in the body metabolism. Question is not performed by vitamins. तो देखो, act as a stimulant in the growth of the body, that is correct. Act as agent in regulating the chemical processes, that is also correct. But they do not act as a source of energy. They are not source of energy. तो source of energy तो नहीं होते. That is why option A will be the answer. Source of energy body में क्या क्या होगा? Macronutrients, भाई दो चीजें हो गया. One is macronutrients और micronutrients. Macronutrients are source of energy. और macronutrients हो गए हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट and lipid or fats. These are macronutrients. These are source of energy, and micronutrients are vitamins. Vitamins are micronutrients.
Macro and micro is because of the size of molecules. Okay. Next question. Raja Gopala Chidambaram, who recently passed away, was associated with the following fields: nuclear physics, politics, social work, and sports. किस फील्ड से रिलेटेड थे मिस्टर राजगोपाल चिदम्बरम? So the answer to this question is he was a nuclear physicist. Rajagopala Chidambaram, he was a nuclear physicist, and he was instrumental in nuclear tests conducted by India in 1974 and 1998. जो पोखरण टेस्ट हुए हमारे वहां पे he was instrumental. Okay. He was also director of Bhabha Atomic Research Center. Bhabha Atomic Research Center from 1990 to 1993. And principal scientific advisor to Government of India also for a brief period. He was also chairman of Atomic Energy Commission for a brief period. Okay? Basically a nuclear physicist. Okay. So these were his contributions. Next question. Anna Chandy, the first Indian woman to serve as a judge at High Court, was appointed in which High Court? First Indian woman to serve as a judge at the High Court. Anna Chandy. कौन से स्टेट में थी? She was appointed in state of Kerala. Kerala High Court में she was appointed as a judge of the High Court. Okay. In which of the following cases did Supreme Court direct that the Parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights for the implementation of directive principles of state policy? Fundamental rights are individual rights, rights given to individuals as per the Constitution. They are in the Part 3 of Constitution. And DPSP, Directive Principles of State Policy, these are duties of state. Okay? Duties of state, and these are in Part 4 of the Constitution. So which of the following cases, in which of the following cases Supreme Court directed that Parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights for the implementation of DPSP? The answer to this question is Golaknath case, option C. Option A, Indira Sahni case. This is pertaining to reservation in jobs for other backward castes. That is Indira Sahni case वाला scenario. ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी. In 1967, in Golaknath case, Supreme Court directed that Parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights. So can't take away fundamental rights for implementation of DPSP. That was in 1967. फिर उसके बाद में केस आया केशवानंद भारती केस, that is option number B, 1973 केशवानंद भारती केस in 1973. और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट gave a basic structure of constitution doctrine. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, यानी कि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर को लिमिट कर दिया, लिमिटिंग अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट. अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट. इसके बाद में केस आता है मिनर्वा मिल्स केस इन 1980. ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस इन 1980. एंड इन दैट केस रीअफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और कुछ अमेंडमेंट्स को स्ट्रक डाउन कर दिया. तो रीअफर्म्ड बेसिक स्ट्रक्चर. दिस इज द क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी को समझो. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉन द टाइटल एट द वर्ल्ड चेस अर्मागेडॉन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट इन अप्रैल 2023? पी हरिकृष्णा, विश्वनाथन, कोनेरू हम्पी और डोमाराजू गुकेश, डी गुकेश इन शॉर्ट.
तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट title or at the World Chess Armageddon, Asia and Oceania was won by D. Gukesh, the youngest chess grandmaster of India. He is an Indian chess grandmaster. He is just 18 years old and currently he is the reigning world champion, of course, in chess, and undisputed world champion, youngest undisputed world champion. Next question. Which regulatory body recently launched Sarthi 2.0 mobile app? Sarthi 2.0 mobile app launched by Securities Authority, SEBI, Securities and Exchange Board of India, SEBI. Okay. They launched Sarthi 2.0 and this is basically a mobile app aiding investors in managing their finance decisions. For investors in making finance decisions or managing their finance. ठीक है. Next question. Pandit Rajiv Taranath, who recently passed away, was associated with which of the following fields? Was he a tabla player, या sarod maestro, classical vocalist, or violin player? Pandit Rajiv Taranath. So Pandit Rajiv Taranath was a sarod maestro. He was a sarod maestro, sarod player from Mysuru. Next question. Identify the sectors into which the Indian economy is divided for the calculation of GDP, gross domestic product. Government, private, social, agriculture, defense, IT and manufacturing, primary and non-primary, agriculture, manufacturing and services. The correct answer to this question is option D, agriculture, manufacturing and services. Agriculture is basically primary sector. Manufacturing is secondary sector. And services is tertiary sector. Next question. Which of the following gases emits red light when electricity is passed through it? Hydrogen, argon, helium or neon? The answer is neon. You must have heard of neon lights. So neon is the gas that emits red light when electricity is passed through it. Okay. Who has been awarded the 2024 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development? 2024 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development. The options are Michelle Bachelet, Joko Widodo, Dina Boluarte and Claudia Sheinbaum. The answer to the question is Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, she was former Chile president. Former Chile president, and she is awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for contribution to gender equality, human rights and democracy. For contribution to gender equality and human rights. Okay. Next question. Which of the following personalities is a Padma Shri awardee folk singer from state of Uttar Pradesh? Ila Arun, Ajita Srivastav, Gurmeet Baba or Tijan Bai? The answer to the question is Ajita Srivastav is a Padma Shri awardee folk singer from the state of Uttar Pradesh. And these are all the questions in this session from जनरल अवेयरनेस. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड give your feedback in comments as well. If you've liked the session, then make sure to hit the like button, and if you've not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join Telegram or WhatsApp channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.